the second topic in this orthopedics, and that is nothing but the upper limb. So ऐसे ही हम पढ़ते हैं जनरली anatomy में भी upper limb, lower limb, thorax करके. So now let us start with the second topic, that is upper limb. So upper limb में generally orthopedics में upper limb के कुछ questions देखते हैं. A motorcyclist met with an RTA. RTA is nothing but the road traffic accident and had a metacarpal fracture. So the fracture is in metacarpal. Hypothenar muscle atrophy is also observed. So hypothenar muscle atrophy is observed. Identify the nerve involved. So यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मेटाकार्पल फ्रैक्चर एंड हाइपोथिनार जनरली मसल एट्रॉफी है. सो यहाँ पे कौन सा नर्व का जनरली क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द नर्व इन्वॉल्व इन दिस केस. सो द नर्व इन्वॉल्व विल बी नथिंग बट द ulnar nerve. So this is ulnar nerve will be our answer. Radial nerve क्यों नहीं, because radial nerve innervates the extensor muscle of the forearm and hand, and injury causes problem in the wrist and finger extension leading to wrist drop. So you must remember this. anatomy से आपको पता है जनरली है ना, clinical aspect में wrist drop radial nerve की problem. Ulnar nerve, why ulnar nerve is the answer here, because it innervates the most of the intrinsic muscles of the hand including the hypothenar muscles. Damage to ulnar nerve can result in the weakness or atrophy of these muscles leading to hypothenar atrophy. नेक्स्ट देखो मेडियन नर्व, ये एट्रॉफी वगैरह सारी चीजें हमने कहाँ पे, वी हैव कंप्लीटेड दिस इन आवर पैथोलॉजी. ठीक है, पैथोलॉजी में भी हमने किया हुआ था ये एट्रॉफी वगैरह सारी चीजें है ना, जनरली सेल इंजरी वाले टॉपिक में आफ्टर दैट. ठीक है, सो एट्रॉफी डिसयूज एट्रॉफी करके हमने पढ़ा था. बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर्स दे अप्लाई जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, वो प्लास्टर एक कास्ट लगा के रखते हैं, एंड ड्यू टू दैट मूवमेंट नहीं करते हम जनरली. सो व्हेन द मूवमेंट इज वेरी लेस, सो इन दैट पर्टिकुलर रीजन देयर विल बी एट्रॉफी, एंड दैट एट्रॉफी विल बी कॉल्ड एज डिसयूज एट्रॉफी. ठीक है, वो हमने किया हुआ था. नेक्स्ट देखो मेडियन नर्व. सो दिस मेडियन नर्व इट इनर्वेट्स मेनी फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म एंड द थिनर मसल्स इन द हैंड and results in the thenar atrophy. So thenar atrophy will be seen, and that will be due to median nerve. Musculocutaneous nerve में it innervates the flexors of the upper arm. You must remember these points. A patient had an injury on the thumb. X-ray showed. Okay. The X-ray showed the following finding. What is the X-ray showing? The X-ray is showing this finding. यहाँ पे देखो ये क्या है? This is nothing but the intra-articular fracture at the base of the first metacarpal. ठीक है, base of the first metacarpal bone extending into the carpometacarpal joint, often accompanied by subluxation or dislocation. This is going to ask your Bennett's fracture. Very important. ये इमेज देके नीट में भी पूछा गया एक बार. So this is generally Bennett's fracture. यहाँ पे देखो scaphoid fracture involves generally the scaphoid bone in the wrist, usually resulting from a fall on an outstretched hand. ठीक है, outstretched hand, ये scaphoid fracture के बारे में बता रहा हूँ मैं. ठीक है, with pain localized to the anatomical snuff box. This will be the buzzword. ठीक है, anatomical snuff box में pain radiate होगा और localized होगा. This is nothing but the scaphoid fracture. A reverse Coles fracture, also known as a Smith's fracture. A Smith's fracture is called as a reverse Coles fracture. Is a fracture of the distal radius with volar or palmar displacement, often due to a fall onto a flexed generally wrist. So this is reverse Coles fracture. Next is a Coles fracture. So Coles का रिवर्स क्या था जनरली, रिवर्स कोल्स को हम क्या बोलते हैं, स्मिथ बोलते हैं. सो उसका उल्टा क्या हो जाएगा जनरली, कोल्स हो जाएगा. सो कोल्स इज अ fracture of a distal radius with dorsal displacement, commonly caused by a fall on an outstretched hand with the wrist extended, and is characterized by a dinner fork deformity of the wrist. ये बहुत बजवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी. दैट विल बी नथिंग बट द कोल्स फ्रैक्चर. नेक्स्ट लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इन दिस केस. यहाँ पे जो हमने ये वाला केस देखा था, इसमें मैकेनिज्म ऑफ इंजरी. This fracture is caused by an axial force directed against the partially flexed metacarpal. This type of compression along the metacarpal bone is often sustained when a person punches a hard object such as the skull or tibia of an opponent or a wall. It can also occur as a result of the fall onto the thumb. So these two are the buzzwords that can be given. यहाँ पे तो इमेज ही दिया हुआ था, otherwise they can give these two buzzwords and you have to generally give the diagnosis that this is nothing but the Bennett's fracture. चलिए आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर. द 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये फ्रैक्चर दिखा रहा है. सो आइडेंटिफाई दिस फ्रैक्चर. सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो रेडियस एंड अनला, टू बोन्स आर बीइंग सीन. सो यहाँ पे देखो देयर विल बी रेडियस, जनरली रेडियल हेड फ्रैक्चर इज बीइंग शोन. ठीक है, रेडियल हेड फ्रैक्चर इज बीइंग शोन. द टॉप पार्ट ऑफ द रेडियस बोन नियर द एल्बो, रेडियल हेड ब्रेक्स डाउन हेयर, ऑफन कॉज्ड बाय अ फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड और डायरेक्ट ट्रॉमा टू द एल्बो. सिम्टम्स विल बी पेन एंड डिफिकल्टी मूविंग एल्बो, पर्टिकुलरली विथ फोरआर्म रोटेशन. ठीक है, पर्टिकुलरली विथ फोरआर्म रोटेशन. सो दिस इज रेडियल हेड फ्रैक्चर.
आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर इन दिस इमेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्चर जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये नेल भी दिखा रहा है। सो दिस इज जनरली लैटरल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर, ठीक है, दिस इज द लैटरल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर और इट इन्वॉल्व्स द लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, कॉमन इन चिल्ड्रन एंड एसोसिएटेड विद एल्बो डिसलोकेशंस, पेन ऑन आउटर साइड ऑफ द एल्बो, स्वेलिंग, डिफिकल्टी मूविंग एल्बो, ठीक है। आगे देखो, मेडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर, देयर विल बी inner part of the elbow will be generally involved and it is common in young athletes. Supracondylar fracture की अगर हम बात करें तो it involves the area just above the elbow, common in children. Infracondylar fracture, it is not at all common, if at all seen just below the condyles. These are the different types of the condyles fracture. Lateral, medial, supra and infra epicondyle fracture. आगे देखो, after an injury the patient presented with the deformity as shown in the image. The X-ray showed following finding which nerve is most likely to be die. ये देखो, this is nothing but the wrist drop, और wrist drop हमने ऊपर पढ़ा था, that was due to generally radial nerve. This questions तो you can do from your anatomy also, ठीक है, anatomy. यहाँ पे देखो, this is the fracture of the humerus shaft, और यहाँ पे कौन सा nerve generally will be damaged? The nerve damage will be radial nerve, that will be leading to generally the wrist drop. ऐसा wrist drop दिखेगा. A person fell on the outstretched hand and got injured at the anatomical snuff box. Just buzzwords पकड़ो इसको. Which bone is most commonly fractured at the anatomical snuff box? तो हमने ऊपर ही पढ़ा हुआ था, स्कैफोइड फ्रैक्चर करके हमने कहीं पे पढ़ा था. Okay, just give me 1 minute. I'll just show you this scaphoid fracture. Look, scaphoid fracture involves the scaphoid bone in the wrist, usually resulting from a fall on an outstretched hand. You got the buzzwords here, with pain localized to anatomical snuff box. So this is nothing but your scaphoid fracture. So this is your scaphoid fracture. Most common fractured bone located in anatomical snuff box and which is a depression on the thumb side of the wrist. So anatomical snuff box, all of you know this. It is a small bone and easily fractured by a fall on outstretched hand. So most common fractured bone in generally anatomical snuff box में generally अगर हम पढ़ेंगे, so generally this is the scaphoid, ठीक है, scaphoid bone. आगे देखो, fall on outstretched hand in pedia, that will be supracondylar humerus fracture. Very important buzzwords. Fall on outstretched hand in pediatric patient, that will be supracondylar humerus fracture. In elderly patient, अगर elderly patient दे तो that will be Coles fracture, and in adults that will be scaphoid fracture. यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया गया था, so it means it is giving a normal adult situation, ठीक है. सो क्या हो जाएगा? scaphoid. आगे देखो, a person fell from the stairs while climbing upstairs and an iron nail hit on his neck. Iron nail hit on his neck. After the injury, the patient is unable to shrug or elevate his shoulders. Shrugging of the shoulder or elevation of the shoulder, and he is having difficulty in turning his head also, ठीक है. What is the structure most likely to be damaged? So जब यहाँ पे shrugging of the shoulder आता है तो you must know from your anatomy only, ठीक है. और if you have covered your एनाटमी रैपिड रिवीजन फ्रॉम डॉक्टर आजम, है ना, वहाँ पर उन्होंने भी जनरली क्या है स्ट्रगलिंग ऑफ शोल्डर वाला बताया हुआ था, एंड दैट इज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व नंबर 11. सो दिस विल बी गोइंग टुवर्ड्स spinal accessory nerve, the nerve number 11. It innervates the trapezius and the sternocleidomastoid. The trapezius is responsible for the shrugging of the shoulder, and that's why generally the shrugging is difficult in these conditions. Sternocleidomastoid is responsible for the turning of the head. So both things will be sternocleidomastoid and general trapezius will be involved, क्योंकि general trapezius और sternocleidomastoid it is supplied by spinal accessory nerve, that is the nerve number 11. और उसके वजह से जनरली आपको प्रॉब्लम क्या होगा? There will be injury to generally द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, और उसके वजह से क्या होगा? ट्रेपेजियस और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड को सप्लाई करता है. देयर विल बी नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस टू मसल्स, एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी श्रगिंग ऑफ शोल्डर में प्रॉब्लम होगा ड्यू टू द ट्रेपेजियस के प्रॉब्लम से, एंड देयर विल बी टर्निंग ऑफ द हेड में भी प्रॉब्लम होगा ड्यू टू स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के फंक्शन लॉस से. सो दिस इज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. आगे चलिए देखते हैं. द नेक्स्ट इज व्हाट इज शोन इन दिस इमेज. सो इन दिस इमेज ये देखो, रिसेंट 2023 में जस्ट 2 years बैक दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज शोन इन दिस इमेज. सो यहाँ पे देखो दिस वन है ना, ये अंदर की तरफ गया हुआ एंगल बना हुआ. सो दिस इज नथिंग बट क्यूबाइटस वैल्गस. क्यूबाइटस वैल्गस. सो दिस इज जनरली इंक्रीज्ड कैरिंग एंगल एट द एल्बो वेयर द फोर आर्म डेविएट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. द फोर आर्म इज डेविएटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी. ये बॉडी है ना, एंड द फोर आर्म इज डेविएटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी. दिस इज वैल्गस. टुवर्ड्स द बॉडी दैट विल बी वैरस, ठीक है. Away from the body more than usual. It can result from various fractures including prior fractures or developmental issue, ठीक है, prior fractures or developmental issue. This is generally the cubitus
वैलगस, दूसरा होता है क्यूबाइटस वैरस। यहाँ पे क्या होगा, फोर आर्म डेविएट्स टुवार्ड्स द बॉडी, द फोर आर्म डेविएट टुवार्ड द बॉडी। गन स्टॉक डिफॉर्मिटी क्या होता है, गन के जैसा है ना, गन के जैसा, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। दिस टर्म इज समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ क्यूबाइटस वैरस, क्यूबाइटस वैरस को भी समटाइम्स we can it is used. Gun stock deformity word is used for cubitus varus also. It can be seen due to the supracondylar humerus fracture. So most commonly you must remember this, that it is generally gun stock deformity will be generally seen due to the supracondylar humerus fracture. Supracondylar humerus fracture। डी नंबर में डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी हमने ऊपर ही देखा हुआ था, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी जनरली ड्यू टू Coles fracture, Coles fracture। A 60-year-old patient presented to OPD department with history of falling on an outstretched hand few months ago. On examination, dinner fork deformity can be noticed. So this is going to answer कोल्स फ्रैक्चर। ठीक है, कोल्स फ्रैक्चर। और जनरली ऊपर भी हमने पढ़ा हुआ था कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे फॉल अगर एल्डरली पेशेंट में होता है तो दैट विल बी लीडिंग टू आर्चर कोल्स फ्रैक्चर। सो कोल्स फ्रैक्चर्स में देखो, देयर विल बी डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर वेयर द डिस्टल फ्रैगमेंट ऑफ द रेडियस इज डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड एंड आउटवर्ड, रिजल्टिंग इन डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी आफ्टर द malunion, and this is generally complication of the malunion. Osteoporosis में there will be decreased bone density and increased susceptibility to any bone fracture। ठीक है, any bone fracture। carpal tunnel syndrome में generally due to compression of generally median nerve in the wrist। carpal tunnel syndrome generally occurs due to the compression of median nerve in the wrist। आगे देखो Smith's fracture, this is generally the distal radius fracture where the distal fragment is displaced palmarly forward and radially outward, resulting in the reverse deformity compared to a Coles fracture। So Smith's fracture is nothing but the रिवर्स कोल्स फ्रैक्चर, और ये हमने अभी जस्ट ऊपर ही किया था। ठीक है, रिवर्स कोल्स फ्रैक्चर। अ पेशेंट फॉल्स ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड फॉर मैनेजमेंट, अ डॉक्टर टाइज अ कास्ट। यहाँ पे एक कास्ट दिया हुआ है। ठीक है, कास्ट गिवन इन द इमेज, व्हिच फ्रैक्चर डिड द पेशेंट सफर फ्रॉम। सो देखो यहाँ पे आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे है और यहाँ पे इतना जगह पे जनरली कास्ट अप्लाई किया गया। सो दिस कास्ट इज अप्लाइड इन जनरली, ऐसे हम क्या करते हैं, ग्लास होल्डिंग पोजीशन है ना, सो दिस इज जनरली ग्लास, ग्लास ऐसे होल्ड करते हैं। सो ऐसे position में generally the cast has been applied. This is generally a glass holding position, and this glass holding position is generally used for the scaphoid fracture। ठीक है, scaphoid fracture। आगे देखो, a patient comes to the OPD with the chief complaint of pain and swelling in the right shoulder. A fracture of clavicle is suspected, a fracture of clavicle is suspected here, which is the most common site of fracture in the clavicle। So, clavicle में this we have read from our anatomy। so अगर anatomy के clinical aspects अगर आपको याद है, then like 30 to 40% questions will be covered from that portion only in your orthopedics। The most common site of the fracture in the clavicle is generally junction of lateral 1/3 and medial 2/3। जनरली चाइल्ड में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर भी इसी का देखा जाता है, एंड जनरली द जंक्शन ऑफ द lateral 1/3 एंड द medial 2/3। इतना याद करना है, lateral 1/3 एंड medial 2/3 के जंक्शन पे। medial यानी कि डी आ रहा है सो 2/3, ठीक है, lateral में टी आ रहा है सो 1/3। ठीक है, lateral। आगे a patient met with a road traffic accident and had a fracture of shaft of humerus। Fracture of the shaft of the humerus is there। After injury, he was unable to dorsiflex the wrist। He was advised a splint as shown in the figure। ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस स्प्लिंट जो ऊपर हमने देखा हुआ था, दैट वाज अ ग्लास होल्डिंग पोजीशन। दिस पोजीशन इज नोन एज कॉकअप स्प्लिंट। दिस इज कॉकअप स्प्लिंट, हेल्प्स टू होल्ड द रिस्ट एंड हैंड्स कॉक्ड अप इन अ सिंगल पोजीशन एंड इमोबिलाइज द रिस्ट ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ द रिस्ट इंजरी। सो ऑफ कोर्स देयर इज इंजरी टू द रिस्ट हेयर, एंड दिस इज जनरली कॉकअप स्प्लिंट। ठीक है, कॉकअप स्प्लिंट। चलिए आगे करते हैं। A patient was diagnosed as a case of supraspinatus tendinitis। Supraspinatus tendinitis, what degree and what movement of shoulder would be painful? So generally there is supraspinatus tendinitis, so what degree and what movement of the shoulder would be painful? So the degree and the movement of the shoulder, that is nothing but the 0 to 15 degree, and the movement will be abduction। This will be generally very painful in this condition। Look, supraspinatus tendinopathy in most cases caused by an impingement of supraspinatus tendon on the acromion as it passes between the acromion and humeral head। Pain when raising the arm forward, sideways or above the shoulder height, as supraspinatus is responsible for 0 to 15 degree of the shoulder abduction। So if you just remember the muscle, the function of the muscle, that is the supraspinatus, अगर उतना अगर आपको याद है, that is generally responsible for 0 to 15 degree movement, और movement कैसा, abduction। so this is generally your answer है। so 0 to 15 degree of shoulder abduction। A child is unable to carry out movements of pronation supination since childhood। Since childhood he is
unable to carry out the movements of pronation and supination. X-ray shown below, possible diagnosis is एक्सरे यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज द पॉसिबल डायग्नोसिस। तो यहाँ पे देखो दिस फोर आर्म जो है, यहाँ पे फोर आर्म बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर। ये देखो दो जो होता है बोन, वो दो बोन्स तो अलग अलग रहने चाहिए है ना, दो बोन्स अलग अलग रहने चाहिए, बट यहाँ पे देखो इट इज जनरली ज्वाइंट, इट इज फ्यूज। सो जनरली दिस इज द fusion of the radius and the ulna, which is called as radio-ulnar synostosis. It prevents from forearm rotation। जब हम ऐसा करेंगे, these both are generally fused, so ये ऊपर नीचे नहीं आएगा। as a result there will be problem in the supination and the pronation। so this is generally radio-ulnar synostosis। this is the answer, radio-ulnar सिनोस्टोसिस। अब यहाँ पे एक देखो, एक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मिड लंग्स डिफॉर्मिटी। सो व्हाट इज दिस मिड लंग्स डिफॉर्मिटी? डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ द डिस्टल रेडियस एपिफाइसिस कॉजिंग डिफॉर्मिटी ऑफ रेडियस डिस्टल एंड, दिस इज कॉल्ड एज मिड लंग्स डिफॉर्मिटी। सो ये आपको याद करना है, मिड लंग्स डिफॉर्मिटी। आगे चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई द लेवल्ड स्ट्रक्चर हेयर। सो व्हाट आर द लेवल्ड स्ट्रक्चर हेयर? सो ये देखो, इसका मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे, ये यहाँ पे पूछ रहा है, एंड आई हैव गिवन यू द कंप्लीट पिक्चर हेयर सो दैट यू कैन सी द एवरीथिंग हेयर। सो ये देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज नथिंग बट कैपिटेलम। ये देखो लैटरल एपिकोंडाइल, सो दिस विल बी मेडियल एपिकोंडाइल। मेडियल एपिकोंडाइल है तो ये ऊपर वाला, ये देखो सुपर इम्पोज्ड ओलिक्रेनन एंड कोरोनोइड फोसा ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस। आगे देखो दिस इज सब लाइन ट्यूबरकल है ना, एंड दिस इज कोरोनोइड प्रोसेस, दिस विल बी ट्रॉक्लिया। दिस इज रेडियल हेड, दिस इज रेडियल नेक, एंड दिस विल बी बाइक्सिपिटल ट्यूबेरोसिटी, बाइक्सिपिटल ट्यूबेरोसिटी। सो यहाँ पे देखो दिस हैज बीन मार्क्ड, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज नथिंग बट द कैपिट्यूलम। ठीक है, कैपिट्यूलम। आगे देखो स्ट्रक्चर्स अराउंड द एल्बस, एल्बो एंड इट्स ऑसिफिकेशन। ये आपको याद करना है, क्रिटोई करके बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। The structures around the elbow and its ossification time. So capitulum generally ossifies by 2 years, radius head by 4 years, internal or medial malleolus by 6 years, trochlea by 8 years, and olecranon by 10 years, whereas the external or lateral malleolus will be ossified by 12 years. You must remember this very important table, this is। आगे देखो, आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन बिलो। सो दिस कंडीशन यहाँ पे एक दिखा रहा है, ये देखो ये आगे गया और यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है। सो दिस इज द डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, व्हेयरएज देयर इज द डिस्टल हाफ रेडियस फ्रैक्चर। ये रेडियस का फ्रैक्चर हुआ है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? देयर इज डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ये एक नेम्ड फ्रैक्चर है, मोस्ट ऑफ यू नो दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द गैलिएजी फ्रैक्चर। ठीक है, गैलिएजी फ्रैक्चर। अब यहाँ पे गैलिएजी जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे दूसरा हमको पढ़ना होगा मोन्टेजिया फ्रैक्चर। सो व्हाट इज मोन्टेजिया? मोन्टेजिया इज जनरली द फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। लेट्स डू दिस वंस अगेन, यहाँ पे कंफ्यूजन हटाने के लिए देखो, डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्नर ज्वाइंट, डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट एंड डिस्टल हाफ रेडियस का फ्रैक्चर, डिस्टल हाफ रेडियस का फ्रैक्चर, दैट विल बी जनरली द गैलिएजी फ्रैक्चर। मोन्टेजिया फ्रैक्चर में क्या होगा? फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल अल्ना, यहाँ पे अल्ना फ्रैक्चर होगा, रेडियस नहीं फ्रैक्चर होगा, विथ डिसलोकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, जस्ट अपोजिट थिंग, यू मस्ट रिमेंबर दिस। आगे चलिए, गैलिएजी एंड मोन्टेजिया फ्रैक्चर, दिस टू आर अपोजिट टू ईच अदर। आगे देखो, a 6-year-old child is suspected with supracondylar fracture of right hand, complaining of pain and swelling. X-ray of the right elbow was not significant. What is the next best step? So यहाँ पे अगर X-ray of the right hand is not significant, so in any condition like this, you always have to compare it with the normal hand. जो जिस ऑर्गन में फ्रैक्चर हो रहा है और जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट कंपेयर इट विद द नॉर्मल ऑर्गन इन द body. So आगे देखो, compare with the X-ray of the left hand. Look, fallen outstretched hand, elbow forced into hyperextension, fracture of humerus above condyles. This can be leading to the supracondylar fracture also. 3-point bony relationship has diagnostic value. 3-point bony relationship. ये देखो, ये 3 point, ये ऊपर का बबल मत देखना, नॉट दिस बबल, दिस बबल, दिस बबल एंड दिस बबल। सो दिस इज द 3 point। यहाँ पे देखो ऐसे अगर है तो दिस 3 बबल, ये तीनों का ज्वाइन करोगे, सो दिस इज 3-point बोनी रिलेशन। इट इज मेड विद द मीडियल मैल्यूलस, lateral malleolus and olecranon process, medial, lateral and olecranon process. The 3-point relationships comes in a horizontal line of if the elbow is extended, and in olecranon fracture this 3-point bony relation is disrupted. In supracondylar fracture 3-point bony relation is maintained. So you must remember this 3-point bony relation is maintained in supracondylar fracture and generally disrupted in olecranon fracture. So यहाँ पे देखो फ्लेक्शन में medial epicondyle, lateral epicondyle and olecranon, और ये extension में, ठीक है, medial, lateral and olecranon, ठीक है। So this is generally 3-point bony
relationship has diagnostic value in the generally elbow fracture. Management of olecranon fracture as seen in the image. So olecranon fracture में generally what will be the management? So look, this olecranon fracture is commonly seen in adults due to direct injury after a fall on the point of elbow. It can be of three types, that is type 1 जिसको हम बोलते हैं crack without the displacement of the fragments. This is generally immobilized. For this you should treat by immobilizing the elbow with an above elbow plaster slab in 30 degree of flexion. Type 2 is clean break with separation of the fragments. This is open reduction internal fixation using the technique of tension band wiring. It is not possible to keep the fragments together in the plaster alone because of the constant pull exerted by the triceps muscles. That's why यहाँ पे आपको क्या करना है, open reduction and internal fixation should be done. Type 3, that is comminuted fracture. If not separated, treated in a plaster slab. If fragments are separated, tension band wiring or excision of fragments may be required. So this is all you need to remember about the olecranon fracture. So open reduction with tension band wiring will be our answer. A tennis player presents with a history of a spontaneous shoulder dislocation, labrum injury. Now he states that he can himself correct the dislocation. So now he can himself correct the dislocation. This condition is most likely, this is nothing but the recurrent anterior shoulder dislocation. Look, most common joint dislocation in the body is shoulder dislocation. That too, the most common type will be the anterior shoulder dislocation. And I remember one of our senior falling down while playing, and he also got this anterior shoulder dislocation. We had to rush him to the hospital. Classification of anterior shoulder dislocation: preglenoid head of humerus lies in front of the glenoid. Subcoracoid, that is most common type, head lies below the coracoid process, and subclavicular is head lies below the clavicle. आगे देखो, एक्स्ट्रा माइल्स में यहाँ पे कुछ और हमको पढ़ना होगा, दैट इज पोस्टेरियर शोल्डर डिसलोकेशन. सो वी जस्ट कंप्लीटेड द एंटेरियर शोल्डर डिसलोकेशन, जो क्या मोस्ट कॉमन जॉइंट डिसलोकेशन इन द बॉडी है ना. नाउ व्हाट इज दिस पोस्टेरियर शोल्डर डिसलोकेशन? इट इज एसोसिएटेड विद epileptiform convulsions or as a consequence of the electric shock. So this will be asked. ठीक है, electric shock, this can be asked in your generally forensic medicine also, FMT also. So there they can ask this consequence of electric shock, and you should answer their posterior dislocation, posterior shoulder dislocation, not the anterior shoulder dislocation. Luxatio erecta, this has been asked, this has been asked so many times. Inferior dislocation, rare type of shoulder dislocation, head comes to lie in the subglenoid position. Hill-Sachs lesion, also called as Hill-Sachs fracture, is a cortical depression in the posterior lateral head of the humerus bone. It is seen in the anterior shoulder dislocation, whereas the reverse Hill-Sachs lesion is due to the posterior shoulder dislocation. Microavulsion is seen on the anteromedial aspect of the humeral head. Bankart lesion is a avulsion of the anterior glenoid labrum. ठीक है, Bankart's lesion is a avulsion of the anterior generally glenoid labrum. So this will be going to also recurrent anterior shoulder dislocation. Muscle in the second compartment of the wrist. So this you know from your anatomy also. This is nothing but extensor carpi radialis brevis and the longus. A patient received an electric shock and fell down. He cannot do external rotation generally of shoulder and cannot move arm. Look, the question has been asked here only. You don't have to go to your FMT. It has been asked in orthopedics only. So this is just we have learnt about this. This is nothing but the posterior dislocation, that is generally in 2 to 4% of the patients of electric shock. You can see this. There will be triad that will be called as a triple E syndrome. There you will see electric shock, extreme trauma and epileptic seizure. This is triple E syndrome. You must remember this. ये एक बार पूछा गया था generally, I think INI में, ठीक है, not in the FMG, but I think this has been asked in INI. A pregnant woman aged 30 years after trauma, feeling tingling pain and numbness at the tips of the thumb, index finger and middle finger. On examination, the doctor presses between the wrist joint for 30 seconds and the patient develops more pain at the tip of the middle index finger and the thumb. What is the diagnosis? क्या है? Of course all of you know, पूरा का पूरा दे रखा है, चिट्ठा खोल के रखा है. This is carpal tunnel syndrome. This is carpal tunnel syndrome. Look, यहाँ पे कुछ syndromes and the nerve involved will do it at one place. So look, this is generally carpal tunnel syndrome, also known as pronator syndrome, जहाँ पे median nerve at wrist, median nerve proximally compressed beneath ligament of the Struthers, bicipital aponeurosis or origins of the pronator teres or the flexor digitum. इतना नहीं भी पढ़ोगे, just remember median nerve. ठीक है, median nerve, carpal tunnel syndrome, cubital tunnel syndrome or Guyon's canal syndrome. Ulnar nerve will be there. Tarsal tunnel syndrome, there will be posterior tibial nerve, that is behind and below the medial malleolus. Thoracic outlet syndrome, lower trunk of brachial plexus, that is C8 and T1, subclavian vessels between clavicle and the first rib. Meralgia paresthetica में lateral cutaneous nerve of the thigh.
हाई, ये आपने किया हुआ है. यू हैव डन दिस इन फिजियोलॉजी, यू हैव डन दिस इन योर पैथोलॉजी, यू हैव डन दिस इन योर सर्जरी, सारे मेडिसिन सब में किया हुआ है दिस क्वेश्चन, मेरालजिया पैरास्थेटिका. So this is generally your different types of the entrapment syndrome and the nerve associated with it. और है क्या यहाँ पे अपर लिम्ब में? अच्छा और है, दिस इज अ लिटिल बिट लार्ज टॉपिक. टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था. टेरिबल ट्रायड बिकॉज, टेरिबल ट्रायड इसको क्यों बोलते हैं? आई विल टेल यू व्हाट इज दिस. दिस इज नथिंग बट द एल्बो डिसलोकेशन विद द रेडियल हेड एंड द कोरोनॉइड फ्रैक्चर. एल्बो डिसलोकेशन, रेडियल हेड एंड कोरोनॉइड, रेडियल हेड फ्रैक्चर एंड कोरोनॉइड फ्रैक्चर विल बी देयर. टेरिबल ट्रायड बोलते हैं इसको. It is called terrible because after this fracture, the joint becomes extremely unstable and fracture segments are usually quite small and hence difficult to repair. That's why it is called as terrible triad. ठीक है. In this generally type of injury, there is recurrent instability of the elbow joint and treatment will be surgical intervention. ठीक है. आगे देखो. What is the true about supracondylar fracture? What is true about supracondylar fracture? So supracondylar fracture, it is most commonly seen among children, child age group, है ना, due to fall on the outstretched hand. We have already read this. सो ट्रू अबाउट सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, यहाँ पे देखो मोस्टली सीन इन एल्डरली पॉपुलेशन नहीं होगा क्योंकि ये चाइल्ड में होता है. फीमेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड, नो, है ना, फीमेल जनरली वहाँ पे होगा नहीं. नेक्स्ट देखो, मोस्ट कॉमन टाइप इज एक्सटेंशन टाइप. ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप इज एक्सटेंशन टाइप. सो जनरली 75 to 80% ऑफ दिस सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर जनरली इज ऑफ एक्सटेंशन टाइप. सो दिस इज जनरली द ट्रू आंसर यार. कैन कॉज नॉन यूनियन, नहीं, इट कैन नॉट कॉज नॉन यूनियन. देखो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर अगर पढ़ोगे तो एंटेरियर इंट्रोसियस नर्व विल बी डैमेज्ड एंड मैल यूनियन ऑफ यूनियन. सो जनरली मैल यूनियन कैन कॉज गन स्टॉक डिफॉर्मिटी. सो यहाँ पे नॉन यूनियन दिया हुआ है, नॉट नॉन यूनियन, इट कैन कॉज मैल यूनियन. ठीक है, मैल यूनियन कर सकता है. सब शोल्डर्स पैथोलॉजी एंड द नर्व्स इन्वॉल्व विथ इट. लुक, एंटेरियर शोल्डर डिसलोकेशन में एक्सिलरी नर्व, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर में जनरली देयर विल बी एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व, ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर में रेडियल नर्व, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में एंटेरियर इंटरोसियस नर्व एंड मीडियन नर्व विल बी इन्वॉल्व, क्यूबाइटस वैल्गस में टार्डी अल्नार नर्व पाल्सी एंड मीडियल कॉन्डाइल ह्यूमरस फ्रैक्चर में अल्नार नर्व विल बी जनरली द इन्वॉल्व. आगे देखो, नर्व इन्वॉल्व इन द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर. सो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर अभी हमने किया, दैट्स रेडियल. Which of the following is static stabilizer of the shoulder joint? Static stabilizer of the shoulder joint is nothing but the negative pressure in glenoid cavity that generally stabilizes the shoulder. यहाँ पे देखो, the static stabilizer versus the dynamic stabilizer of the shoulder joint. So static stabilizer will be glenoid labrum, glenohumeral ligament and negative pressure in the glenoid cavity. They will be generally contributing toward the static stabilization of the shoulder joint, whereas dynamic stabilizer, that is SITS करके हम पढ़ते हैं, this mnemonic very famous mnemonic, that is SITS करके, that is supraspinatus, infraspinatus, teres minor and subscapularis. Don't get confused, not teres major, it's teres minor. यहाँ पे देखो, सिट्स मसल इज ऑल्सो नोन एज रोटेटर कफ मसल, हमने एनाटॉमी में किया था. सिट दैट इज सुप्रास्पाइनेटस, है ना, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर इंसर्ट्स ऑन ग्रेटर ट्रोकेंटर, दैट इज सिट ऑन जिट करके हमने पढ़ा था. ठीक है, सिट ऑन जिट दैट इज ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड सब स्कैपुलरिस इंसर्ट्स ऑन द लेसर ट्रोकेंटर, वेयर द टेंडन passes in the intertubercular groove along the head of the biceps brachii. This all we have covered in our anatomy. Supraspinatus injury leads to which of the following? Supraspinatus injury leads to generally this supraspinatus generally assists deltoid in abduction of arm by fixing head of the humerus against the glenoid cavity. So generally which of the following injury leads to which of the following? It will lead to the deformity in abduction. Deformity in abduction. So the person will not be able to generally abduct. If a man lifting up suitcase, posterior dislocation of glenohumeral joint is prevented by. So look, this is the posterior dislocation of the humor. The classical feature will be arm is held in the medial rotation and is locked in that position. Medial, the patient will come to you with the arm held in the medial rotation and generally it is locked in that position. So ये generally क्या होगा? Joint is prevented by the muscle called as coracobrachialis. Which of the following test of the shoulder dislocation is verified by just looking at the axillary fat folds? This is nothing but the Bryant's. जनरली यहाँ पे देखो, ब्रायंट्स टेस्ट फॉर शोल्डर डिसलोकेशन कैन बी मेमोराइज्ड बाय सिंपल निमोनिक, दैट इज BDCH. BD चौरसिया करके याद कर सकते हो, BDCH. ब्रायंट्स टेस्ट, लुक एट द एक्सिलरी फैट फोल्ड ऑन द डिसलोकेटेड साइड, इट इज डिस्प्लेस्ड इन्फेरियरली इफ कंपेयर टू नॉर्मल साइड. बस देखने से पता चल जाएगा और यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, दैट इज ब्रायंट्स टेस्ट. ड्यूगास टेस्ट, सो ड्यूगास टेस्ट इज इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू पुट द हैंड ऑन द अपोजिट शोल्डर देन ब्रिंग द एल्बो क्लोज टू चेस्ट. इनएबिलिटी टू परफॉर्म इट मीन्स इट इज पॉजिटिव एंड देयर विल बी shoulder dislocation.
Calvage test. So Calvage test is generally check for the circumference of the dislocated shoulder and compare it with the normal side. Circumference on dislocated side will be more than that on the normal side. Hamilton ruler test. This has been asked. Hamilton ruler. If a ruler is placed on the upper arm, its two ends can easily touch the acromion and lateral condyle in a straight line. In normal person, it will not be possible due to the humeral head generally prominence. आगे देखो यहाँ पे पूछा गया हिल सैक्स लीजन. सो हिल सैक्स लीजन इज जनरली ड्यू टू द शोल्डर डिसलोकेशन, जनरली cortical depression in the posterolateral head of the humerus bone seen in anterior shoulder dislocation. Anterior shoulder dislocation में reverse hill sac lesion is due to the posterior shoulder dislocation. Microavulsion is seen on anteromedial aspect of the humeral head, whereas the Bankart lesion is avulsion of the anterior glenoid labrum. This we have already covered है ना. आगे देखो Coles fracture is of the following tendons likely to rupture. In the Coles fracture इसके बारे में बहुत बात किया हमने. This is nothing but extensor pollicis longus. आगे देखो complications. Some complications of the Coles fracture will be joint stiffness is the most common complication. Malunion is the second most common. Suddex osteodystrophy, rupture of extensor pollicis longus tendon. This is less common complication, usually seen after the fourth week of the injury. Kienbock's disease is avascular necrosis of Kienbock's is avascular necrosis of generally the necrosis with fragmentation and collapse of the lunate bone. ठीक है, this is Kienbock's disease, another name for the avascular necrosis with fragmentation and collapse of the lunate bone. So this is lunate will be our answer. Monteggia fracture is fracture of the proximal third of the ulna with dislocation of the head of the radius. Dislocation radius का हो रहा है, so this is Monteggia और उसका opposite मैंने आपको already बताया हुआ है. आगे देखो content of the anatomical snuff box. So the content of the anatomical snuff box will be a radial artery. The only content which runs in group, all other are either on the floor or the roof. Which of the following does not indicate ulnar nerve injury? Ulnar nerve injury may generally abductor pollicis longus palsy. So this does not indicate ulnar nerve generally इंजरी. यहाँ पे एक साइन होता है फ्रोमेंट साइन. फ्रोमेंट साइन इज द टेस्ट फॉर द पाल्सी ऑफ अल्नार नर्व. दिस इज द एक्शन ऑफ एडक्टर पॉलिसिस. एडक्टर पॉलिसिस नॉट एबडक्टर पॉलिसिस. आगे देखते हैं लास्ट towards the question. First sign of Volkmann's ischemia. The first sign of Volkmann's ischemia is generally pain. Look, the clinical features of the Volkmann's ischemic contracture. Pain out of proportion to physical examination findings. Pain on passive stretching. This is the first sign. Pressure is increased. Pallor may also be generally pink. Pallor or pink may be seen. Pulselessness, paresthesia and paralysis. This paresthesia has been asked so many times. Pulselessness is a late sign and is unreliable for the diagnosis of the compartment syndrome. Nerve involved in Volkmann's ischemic contracture will be anterior interosseous nerve followed by median nerve. So दोनों अगर दिया हुआ है तो interosseous nerve में लगाना है. Finkelstein test is done for. So this Finkelstein test में क्या होता है? Grasp the thumb and the hand is ulnar deviated sharply. ठीक है, जब grasp thumb को आप करोगे तो the hand is deviated towards the ulnar end sharply, and if sharp pain occurs along distal radius, it is indicative of tenosynovitis. So this is Finkelstein's test, which is generally done for the dequervians tenosynovitis. ठीक है, tenosynovitis. Dupuytren's contracture is associated with all except. So let's see what is this Dupuytren's contracture, because this is very important. ठीक है, Dupuytren's contracture is generally condition in which the tissue lining underneath the skin on the palm and fingers become thickened and scarred. This is Dupuytren's contracture. As a result, the tissue lining shortens and may cause puckering of skin or limit the ability to straighten the finger joints. Usually a non-painful condition. Cause is generally idiopathic. Most common affects the ring finger followed by the little fingers. Thumb involvement is rare, and most common joint involved will be MCP followed by the PIP joint. ठीक है, metacarpophalangeal followed by PIP joint. So generally here the tabletop test is negative. Yeah, generally this is not associated with generally Dupuytren's contracture. Usually not painful, involves the ring and little finger. Clostridial collagen spore resorption. ठीक है, तो ये C नंबर आंसर हो गया. गन स्टॉक डिफॉर्मिटी इज सीन इन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस. देखो दिस गन के जैसा है ना, गन के जैसा गन स्टॉक डिफॉर्मिटी. दिस इज सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर. एपोनिम फॉर फ्रैक्चर शोन इन द बिलो एक्सरे. अरे यार ये देखो डिस्ट्रप्शन ऑफ अपर रेडियो अल्नार जॉइंट. दिस इज जनरली Monteggia फ्रैक्चर. दिस इज योर Monteggia फ्रैक्चर. दिस इज एक्यूट फ्रैक्चर है तो ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन क्लोज रिडक्शन एंड प्लास्टर कास्ट. whereas an adult orif with plate radial head reduces spontaneously after this orif plate. ठीक है, this is Monteggia fracture. So you must remember this Monteggia fracture. ठीक है, Monteggia, Smith, Coles, ये सब आपको याद करना होगा. These are the named fracture. These are asked most frequently. So this much for this topic. We have already completed our upper limb, and the next topic I'll try to cover the lower limb from the orthopedics. Thank you so much. I'll meet you in the next video. ठीक है.